So we will now discuss about cells, right? So when we try to what you want to see, come. What? Okay. This will go in YouTube. Okay, and I'll recommend people that please share this video. They will see your beautiful faces. They're doing like girls. Let's talk about cells. So we have already learned, no, that why cells are called the structural and fundamental structural and functional fundamental unit. About that we have understood. We have understood what cells are made up of and what life is, life processes, all these things we have understood. I today would like to speak more about the shape of the cells. The shape of the cell, different types of cell in different bodies have different shapes because they have different functions. The shape of the cell is according to the function of the cell. The size of the cell is also according to the function of the cell. Means the shape and size of the cell is according to the function of the cell. Suppose for example, if you take the example of neurons, nerve cells, they are long. They are the longest cell in the human body. Are you getting my point? Why are they long? They are long because they need to conduct signals. They are used for signal transduction. Signal transduction or signal transport. Okay, suppose I am speaking to you, you are hearing. This is also a signal transduction, and if I touch you, you feel the touch. If you touch a hot object, you feel the heat. All these things are taken in the form of electrical signals to your brain. Are you getting my point? So these are done by neurons. So something which is supposed to work as a wire is supposed to be long and thin, right or wrong? So neurons are long. If you have ever seen the picture of neuron, you will know. In the same way, RBCs in the human body, they are supposedly, biconcave, means concave from both the sides, up and down. Okay, why? To increase the surface area. Any spherical part has more surface area than any straight. Suppose a wall is there, a wall is plain, straight. If the same wall is being made concave, it will increase the surface area. Okay, spherical part is always more in surface area. Surface area means area of the surface. So sir, why more surface area is required in case of RBCs? Because the work of RBC is to conduct what? Is to conduct electrical signals. Is to transport oxygen, and for transporting oxygen, they need to bind with oxygen. Okay, what is there? There is RBC ke upar there is hemoglobin. Okay, 4 molecules of hemoglobin are there. So one RBC can bind to 4 oxygen. Okay, and in total, if you want to see, one hemoglobin can bind to 4 hemoglobin. One hemoglobin molecule can bind to 4 oxygen. Always remember, one hemoglobin molecule can bind to how many oxygen? 4 oxygen. And in one RBC, there can be 300 million hemoglobin molecules, and hence can transport 1.2 billion molecules of oxygen. Means একটা hemoglobin যদি 4টা অক্সিজেনের সাথে বাইন্ড করতে পারে, in one RBC एक hemoglobin अगर 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है, और अगर एक RBC में 300 मिलियन हेमोग्लोबिन है, तो 300 into 4 is 1.2 billion. So one RBC can transport 1.2 billion molecules of oxygen. Now, why this big number? Because of this concave shape. Because of the concave shape or the spherical shape, biconcave shape. Is this clear to you? So RBCs are biconcave because of that reason. Then again, do you know which is the smallest cell of human body? This is very interesting actually.
The smallest cell in a woman's body is different. Ovum is the largest cell. Ovum is the largest cell of the human body. But ovum is not there in the male body. Right or wrong? So that is one thing. And then which is the smallest cell? Sperm. Sperm is the smallest cell. Are you getting my point? Sperm is the smallest cell, ovum is the largest cell. And in the second number only comes RBC. Means in a female body, the largest cell is ovum, the smallest cell is RBC, because the woman body or female body will not contain sperm. Right or wrong? But in case of male body, the smallest cell will be sperm and the largest cell will be, this I have to see, I think megakaryocytes. This is a type of cell which is found in the immune system. Might be. No, nerve cell is the longest cell. Largest means I'm talking about large. Which is the largest cell in the world? Ostrich egg. Egg is a cell. Like zygote is a cell. Zygote is the fusion of sperm and ovum. In the same way, egg is also a cell. So ostrich egg has to be the largest cell. But you know, an algae was found. You can Google it. I forgot the name of the algae. An algae was found which was only of one cell, and it was pretty large, larger than, you know, if you took its entire cellular mass, it became larger than the ostrich egg. One cell, but it was flat, floating in the water. Okay, it was only one cell. Anyway, I forgot the name of the algae. It was found. This is one thing. Again, talking about the shapes of the cells. Why does sperm contain tail? Because it has to swim. Do you know that sperm has to contain tails? Yes, sir. At the back of it? Right or wrong? The head and tail. Yeah, the sperm has a head and a tail. Why does it contain the tail? Because it has to swim. If it has to fertilize the ovum, it has to swim up the fallopian tube. Fallopian tube is, when you will learn the chapter reproduction, you will know, okay, that in female reproductive organ, there is a fallopian tube which is pretty up, okay, and it has to swim and climb up. So sperm requires a lot of energy also, and that's the reason sperm has a lot of mitochondria also. Now coming to mitochondria is a cell organelle. I'll discuss about that. Let us discuss about more shapes. So 3 examples I have given you, right? Why is the suppose for example the WBCs, some of the WBCs are irregular shaped. Okay, suppose if you take example of RBCs are also different. when the RBCs become sickle shaped, that is known as sickle cell anemia. That is a disease, genetic disease. You know, people with sickle cell anemia cannot be affected by malaria. In African countries, this information is little bit classified. In African countries, sickle cell anemia first appeared as genetic disease. Means they developed that genetic disease in them. Genetically, they got that disease to save themselves from malaria. Malaria cannot develop in a sickle cell WBC. There is lot of genetics about it. You will not understand if I speak this to class 9, but know this information. Okay, now the fact is this, that what are you saying? WBCs, the WBCs are irregular shaped. Why no? You know why WBCs are irregular? Some of the WBCs are irregular shaped. Some of the WBCs. Okay, like for example macrophages. So they are irregular shaped because they, just like amoeba, they engulf the foreign particles that enter inside our body. Are you getting my point? Like they develop amoeba when they have to take food. What they do? They develop pseudopodia and take in the particle inside, food particle inside, right or wrong, creating a food vacuole. In the same way, macrophages also, if any foreign virus, bacteria, whatever enters in our body,
the WBC as a part of the defense system of the body or the immune system of the body tries to engulf or engulfs the foreign particle and does the same thing. So for that reason they need to be flexible and irregular shaped. Yes or no? To perform that function very well. So this is one of the reason. Then again, take the example of parenchyma, collenchyma, sclerenchymatous cells. Okay, sclerenchymatous cells in plants provide protection to plants. And I think I had told last day that in sclerenchyma, the cell wall is really very thick. It becomes lignified. मतलब the cell wall of plant is generally made up of cellulose. कभी-कभी sclerenchymatous cells में सेलुलोज का डिपोजिशन के जगह में लिग्निन का डिपोजिशन होने लगता है और वो थोड़ा ज़्यादा ही मोटा हो जाता है सेल वॉल ओनली स्क्लेरेनकाइमा में. इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? स्क्लेरेनकाइमा प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन. सो दिस यू रिमेंबर, स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल्स एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन. कोलेनकाइमा प्लांट का डंडी देखा है, फ्लेक्सिबिलिटी आता है ना, थोड़ा एक लेवल तक फ्लेक्सिबिलिटी होता है, उसके बाद तोड़ सकते हो, राइट और रॉन्ग. और कुछ का देखना बहुत ज़्यादा ही फ्लेक्सिबिलिटी होता है. यस और नो? फ्लेक्सिबिलिटी इज बिकॉज ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, सॉरी कोलेनकाइमा. स्क्लेरेनकाइमा तो प्रोटेक्शन, कोलेनकाइमा. You will see, if you see collenchyma, why it can give flexibility, you know? It is only, the cell wall is only thick at the tip and the bottom. Suppose this is the cell though. The entire cell wall is not fat or mota. It's not like that. The deposition of cellulose is more at the top tip of the cell and bottom of the cell. And that makes it that makes it, you know, that shape, when mini sclerenchyma together comes, that makes it, you know, flexible. That tissue makes the entire organ or the entire branch, dandi bolne ja raha tha, anyway, entire branch flexible. So this is the function of the cell which makes the cell appear in that shape. Is this clear to you? In bacteria also the same thing happens. In unicellular organism also different bacteria are of different shape according to the genetic constitution of the bacteria, how the kind of genes the bacteria contain and what is their role. Role means how they survive, in which environment. Are you getting my point? Suppose for example, Treponema pallidum is a bacteria which is the shape of snakes, serpentine shape. It's a bacteria. If you see under the microscope, you will find saper moto. Are you getting my point? But they are bacteria, unicellular. Why, you know? Because it creates infection. Treponema pallidum creates an infection known as syphilis. Syphilis is a STD, sexually transmitted disease. Okay. Now, this Treponema pallidum, after entering the body, grows inside the nerve cells. So don't you think usko patla hona padega, chota hona padega? Because nerve cell is thin and long. Yes or no? So patla hone isliye wo saap ke jaisa hai. There is bacillus shaped cells, there is cocci shaped cells in bacteria. I think in class 8 in microorganism chapter this was there of CBSE. Shapes of different bacteria. If they had interest, they might have learned. Okay, some are cocci shaped. Cocci shaped means they are goal. Some are vibrio shaped. Vibrio shaped means comma shaped. Some are this kind of serpentine shape, like Treponema pallidum. Okay, some are very small, some are large. Okay, the largest bacteria in the world is Thiomargarita, Bacillus thiomargarita. The smallest bacteria in the world is Mycoplasma. Mycoplasma is the smallest. Mycoplasma is a kind of bacteria which doesn't have cell wall. Only 3 types of organism in this world have cell wall: bacteria, plant and fungi. Bacteria का cell wall is made up of peptidoglycan बोल के एक structure. Fungi का cell wall is made up of a polysaccharide known as chitin, CHITIN, and plant का cell wall is made up of cellulose. But there is one bacteria which example you can cite, that the bacteria whose cell wall-less bacteria is Mycoplasma. Remember this. Anyway, I have talked a lot about the
shapes and size of the cells. I have given a lot of examples. Now the fact is this, the main difference between prokaryotic and eukaryotic cell. What is the main difference between prokaryotic and eukaryotic cell? You will say that, sir, in previous video you have taught us that in prokaryotic cell it is not covered with cell wall. The what is not covered with cell wall? Cell wall, but plant cells are eukaryotic but they have cell wall. सेल वॉल से प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का नहीं, सेल मेम्ब्रेन से प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का कोई जाता आता नहीं है. न्यूक्लियस भाई. प्रोकैरियोटिक. डू यू नो द मीनिंग ऑफ कार्योन और कार्योटिक? कार्योन मीन्स द नहीं, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कार्योन मीन्स द न्यूक्लियस. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कार्योन मीन्स द न्यूक्लियस और द जेनेटिक मटेरियल. Prokaryotic, primitive nucleus. Eukaryotic, new, EU means new. Eukaryotic, new nucleus. Primitive nucleus is actually no nucleus, not having any nuclear membrane, nothing. In prokaryotic organisms, in bacteria, if you see, the DNA is just entangled in between itself. The DNA खुद में ही सुपर कॉइल्ड हो गया है और वहाँ पे कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अंदर डाला हुआ है और ऐसे ही बैठा हुआ है साइटोप्लाज्म के अंदर. उस चीज़ को न्यूक्लियोइड कहा जाता है. क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोइड का स्पेलिंग है NUCLEOID. न्यूक्लियोइड कहा जाता है. आई बात समझ में? हाँ. और यूकैरियोटिक में यही जो डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो क्रोमाटिन थ्रेड फॉर्म करता है, मतलब बहुत अच्छे से सुपर कॉइल होता है. और वो सुपर डीएनए जो है, डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था ना थोड़ा बहुत, बेटर वन. और डीएनए जो है, डीएनए कैसे सुपर कॉइल होता है, किस तरह से सुपर कॉइल होता है, हाउ इट गेट्स सुपर कॉइल्ड वेरी नाइसली एंड गेट्स इनसाइड द सेल, गेट्स इनसाइड द न्यूक्लियस. आई विल टेक अ सेपरेट class about it because that is pretty much huge and you need to learn about it. That separate class means separate 15 minutes 16 minutes video will be there. Anyway, उसके लिए मुझे बोर्ड चाहिए होगा, मैं समझाऊंगा वो चीज़. लेकिन हाँ, थोड़ा हाई लेवल ऑफ कॉइलिंग होता है और वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है. ये हो गया तुम्हारा यूकैरियोटिक. लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि ये देयर इज ओनली वन डिफरेंस. नो, इन प्रोकैरियोटिक there is not the presence of cell organelle. Cell organelle is not present in prokaryotic. However, in eukaryotic, cell organelle is present. Now, what do you mean by cell organelle? Can I have the remote of the AC, please? Now, what is the meaning of now what is the meaning of what to say? Cell organelle. Yes, one can say this. He is correct. The functional unit of cell means देख, सेल को भी बहुत सारा काम करना पड़ रहा था. जब मैंने तुम लोगों को एवोल्यूशन के थ्रू समझाया है ना. अब एक प्रोकैरियोटिक सेल में देख ले, वही सेल न्यूट्रिशन करता है, वही सेल एक्सक्रीशन करता है, उसी सेम सेल में रेस्पिरेशन भी होता है साइटोप्लाज्म में, वही सेम सेल डिवाइड करके रिप्रोडक्शन भी करता है. और मैंने तुम लोगों को बताया कि ईच ऑफ द लाइफ प्रोसेस में देयर आर मीन्स टन्स ऑफ, नॉट टन्स ऑफ बट स्टिल देयर आर लॉट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन ईच ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस. सिर्फ न्यूट्रिशन को उठा के देख ले, सिर्फ रेस्पिरेशन को उठा के देख ले, सिर्फ रेस्पिरेशन को उठा के देख ले, सिर्फ रिप्रोडक्शन को उठा के देख ले. ईच ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस, बेसिक लाइफ प्रोसेसेस में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं. तो इतना सारा केमिकल रिएक्शन मतलब इतना सारा एंजाइम्स का ज़रूरत है, इतना सारा जगह का ज़रूरत है, राइट और रॉन्ग. तो अगर सेल के अंदर स्पेसिफाइड जगह बन जाए, स्पेसिफाइड प्रेजेंस ऑफ सम स्ट्रक्चर हो जाए कि वो एक फंक्शन करेगा, ये एक फंक्शन करेगा, ये एक फंक्शन करेगा, वो एक फंक्शन करेगा, तो अच्छा होता. तो इसीलिए सेल ऑर्गेनेली धीरे धीरे जो एवोल्यूशन के थ्रू डेवलप हुआ और इसीलिए वो यूकैरियोट में देखा जाता है, प्रोकैरियोट में नहीं देखा जाता.
क्योंकि प्रोकैरियोट्स आर लिटिल बिट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? याद रहेगा बात। सो अब बात ये है कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक तो हो गया। अब बात ये है कि हाँ, ये मेन डिफरेंसेस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, ये दोनों पॉइंट मेन डिफरेंसेस है। और कोई पॉइंट बन सकता है? शेप मैंने तो बताया, प्रोकैरियोटिक सेल भी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का होता है, यूकैरियोटिक सेल भी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का होता है। अभी तो बताया, यही चीज़ तो समझा है ना। अलग अलग शेप्स का बैक्टीरिया भी होता है, अलग अलग शेप का यूकैरियोटिक सेल भी होता है। हाँ नहीं, लाइफ स्पैन वाइफ स्पैन वो सब मत बोलो। अच्छा, ये गधा बोल रहा है, देखो उस गधे का मुंह देखो, गधा मुंह देखा दो। हाँ। ये गधा बोलता है फोटोसिंथेसिस। मैंने क्यों तुम लोगों को सिखाते हुए नहीं सिखाया था कि बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस, कुछ कुछ बैक्टीरिया ऐसा होता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकता है, राइट और रॉन्ग? तो ये क्या डिफरेंस है? हाँ, डेफिनेटली प्लांट के सेल्स यूकैरियोटिक है, लेकिन प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया भी ऐसा होता है जो क्लोरोफिल कैरी करता है। इससे मेरे को एक अच्छा सा कहानी याद आता है। कहानी मतलब बहुत अच्छा कहानी है, सुनना चाहोगे? Yes. इसको कहते हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है। और जो भी चीज़ थ्योरी है वो कहानी जैसा ही लगता है मेरे को। देख, हुआ क्या था कि जब लाइफ फॉर्म हुआ था, तो लाइफ फॉर्म होने के बाद कुछ ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफिक थे। ऑटोट्रॉफिक थे मतलब वो आइदर फोटोसिंथेसिस या केमोसिंथेसिस कर सकते थे। फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट को यूज करके CO2 को पकड़ के अपना C6H12O6 या खाना बना लेना। और केमोसिंथेसिस मतलब केमिकल एनर्जी यूज करके, लाइट एनर्जी के जगह पे केमिकल एनर्जी यूज करके फिर से CO2 को यूज करके C6H12O6 बना लेना या अपना खाना बना लेना। और इसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ लाइफ, क्योंकि वो CO2 से कार्बन को ट्रैप कर पा रहा है। और कुछ होते थे हेटेरोट्रॉफिक, जो इनके ट्रैप किए हुए बनाए हुए खाने को खाते थे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आज भी वही चल रहा है, कोई ऑटोट्रॉफिक है कोई हेटेरोट्रॉफिक है, जस्ट वे डिफरेंट हो गया है। क्या हुआ था कि कुछ कुछ हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, अब कहानी यहाँ पे शुरू होता है, इतना तक समझ में आया? कुछ कुछ हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो क्या कर लिया, वो देखा कि अरे भाई जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, ठीक है, उस फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को देख के बड़ा वाला हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया सोचा ये तो मज़े की चीज़ है, मैं ढूंढ ढूंढ के खाना खाता हूँ, ढूंढ ढूंढ के फिक्स्ड मतलब कहाँ से मेरे को ऑर्गेनिक मैटर मिल जाए मैं खाता हूँ, ऑब्जॉर्व करता हूँ। इसको अगर मैं अपने सेल के अंदर एनगल्फ कर लूँ तो ये तो वैसे ही फोटोसिंथेसिस करेगा और मेरे को खाना मिलता रहेगा। तो उसने क्या किया, उस बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लिया, ठीक है। और उससे पहले उसने सोचा कि उसके बाद उसने सोचा, जब भी सोचा कि अरे मैं अगर एक दूसरा हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया को भी खा लूँ। एक हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया सोच रहा है, दूसरा बहुत एक्टिव हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया था, बहुत एक्टिव था, मतलब फटाफट एनर्जी बना रहा था उसका सेल, ठीक है, इसको भी खा लेता हूँ, ये मेरे सेल के अंदर रहेगा, अच्छे से एनर्जी बनाएगा, मेरे को कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं। तुम लोगों को पता है बाद में जाके वही क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया बना। ये ट्रू है, ठीक है, ये मतलब विश्वास करने लायक थ्योरी है। क्योंकि क्यों इसका प्रूफ क्या है मैं बताता हूँ। तो अगर क्लोरोप्लास्ट को देखेगी तो क्लोरोप्लास्ट में देखना डबल मेम्ब्रेन है। तो ये साइंटिस्ट थ्योरी करते हैं डबल मेम्ब्रेन इसलिए है क्योंकि एक पहले सेल वॉल था, अंदर का सेल मेम्ब्रेन था, इसीलिए डबल मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डबल मेम्ब्रेन है। ये एक प्रूफ नहीं है। सेकंड प्रूफ, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का DNA होता है और वो भी सर्कुलर। और बैक्टीरिया को उठा के देख ले, बैक्टीरिया के पास सर्कुलर DNA है, ठीक है। और ये दूसरा प्रूफ नहीं है, तीसरा भी प्रूफ है। तुम लोगों को राइबोसोम के बारे में पता है? डू यू नो अबाउट राइबोसोम्स?
Ribosomes does what? Ribosomes does protein synthesis. नाइट्रोजन तक राइबोसोम्स डज प्रोटीन सिंथेसिस। यूकारियोट में जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है, यूकारियोट का जो राइबोसोम है वो होता है 80s राइबोसोम, शायद मैंने बताया था तुम लोगों को। और प्रोकारियोट का जो राइबोसोम होता है वो होता है 70s राइबोसोम। ठीक है, यूकारियोटिक सेल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर झांक के देखना 70s राइबोसोम पड़ा हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया में झांक के देखो 70s राइबोसोम पड़ा हुआ है। तो मैं इसको क्या सोचूं, एक सेल ऑर्गेनेली जिसके पास डबल मेम्ब्रेन है, खुद का डीएनए है, राइबोसोम है, ठीक है, और जिसके पास भरा हुआ मतलब क्लोरोफिल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? शायद पहले वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा था और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया था, क्योंकि सारे कैरेक्टर्स बैक्टीरिया जैसे मैच हो रहे हैं। राइट और रॉन्ग? आज भी अगर कोई इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को उठा के देख ले तो उसमें तेरे को एक स्ट्रक्चर मिलेगा, जिस स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे मेसोसोम। मेसोसोम मतलब उसका सेल मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग है। सेल मेम्ब्रेन होता था तो सेल मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग है, इनवर्ड साइटोप्लाज्म में फोल्ड होके अंदर की तरफ सरफेस एरिया बढ़ा दिया है और वहां पे क्लोरोफिल मेम्ब्रेन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और एक स्ट्रक्चर होता था क्रोमाटोफोर। क्रोमाटोफोर्स भी, सॉरी, मेसोसोम्स रेस्पिरेटरी एंजाइम कैरी करता था, सॉरी, मेसोसोम कैरी करता था रेस्पिरेटरी एंजाइम, सॉरी, रेस्पिरेशन करने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए वो कैरी करता है। और दूसरा एक इन्वेजिनेशन है, इन्वेजिनेशन मतलब अंदर की तरफ फोल्डिंग है सेल मेम्ब्रेन का, उसको कहते हैं क्रोमाटोफोर। उसमें था ये क्लोरोफिल। और तू क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के अंदर देखेगा तो थाइलाकॉइड मिलेगा, मेम्ब्रेन, वैसे ही मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर मिलेगा जिसके ऊपर तू देखेगा ये मिलेगा, क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोफिल पिगमेंट मिलेगा। इज दिस क्लियर टू यू? एम आई बीइंग एबल टू मेक माई सेल्फ क्लियर? तो ये थियोरिटिकली मैच हो जाता है कि इसीलिए साइंटिस्ट ने सोचा कि शायद ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी प्रपोज किया था कि शायद ऐसा हुआ होगा कि कोई एक बड़ा हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में दूसरे बैक्टीरियाज को खा लिया होगा और अपने अंदर रख लिया होगा, और वही बाद में थ्रू एवोल्यूशन स्ट्रक्चर चेंज किया और मतलब और फाइन स्ट्रक्चर बन के क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया बन के उभरा। और थ्योरी यह बताता है कि शायद कोई हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया या हेट्रोट्रॉफिक क्या बोलते हैं, प्रोटोजोआ या कोई, क्लोरोप्लास्ट को एनगल्फ नहीं कर पाया। इज दिस क्लियर टू यू? और वो बने क्या, एनिमल्स। और जो लोग क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया दोनों को एनगल्फ कर पाया वो बन गए प्लांट्स। तो ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बारे में ये सेल ऑर्गेनेलीज है। कोई अगर पूछ दे तुम लोगों को, देख इस एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी पढ़ के कितने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द सेल ऑर्गेनेली व्हिच हैज इट्स ओन डीएनए। Question number 2, name the cell organelles which have double membrane. Question number 3, name the cell organelles which have their own ribosome. Question number 4, name the cell organelles which have double membrane. बोला ही मैंने। तो 3 क्वेश्चंस तो यहीं पे हो गए, राइट और रॉन्ग? तो ये तो डबल में दोनों का आंसर क्लोरोप्लास्ट और ये होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। Name the, question number 4, name the cell organelle which is called the powerhouse of the cell and makes energy continuously. Mitochondria. Right or wrong? Name the cell organelle which is responsible for photosynthesis and carries chlorophyll. Chloroplast. Actually क्लोरोप्लास्ट पढ़ा जाता है प्लास्टिड टॉपिक के अंदर। कौन से टॉपिक के अंदर? प्लास्टिड्स बोल के एक टॉपिक है उसके अंदर। प्लास्टिड्स आर आल्सो सेल ऑर्गेनेल्स। लेकिन हाँ, ये गलती कभी मत करना, सेल ऑर्गेनेली को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से गुबलेट मत कर देना, आई मीन कंफ्यूज मत कर देना। मुझे तो पता है ना कितने महान आदमी लोग पढ़ाते हैं तुम लोग को स्कूल में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी सेल ऑर्गेनेली बताते हैं, गोल्गी अपैरेटस को भी सेल ऑर्गेनेली बताते हैं, राइबोसोम को भी सेल ऑर्गेनेली बता देते हैं। राइबोसोम सेल ऑर्गेनेली इसलिए नहीं है क्योंकि सेल ऑर्गेनेली एक तो राइबोसोम के पास मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है,
राइबोसोम को सेल इंक्लूजन सोच सकते हो तुम, सेल ऑर्गेनेली नहीं बता सकते राइबोसोम को। सेल ऑर्गेनेली का कॉन्सेप्ट आने के लिए उसका कैसे बताऊं, अभी कैसे समझाऊं, किसी सेल ऑर्गेनेली को कभी देखा है मतलब डीएनए के ऊपर बैठ के पॉलीराइबोसोम स्ट्रक्चर क्रिएट करते हुए? उसको सेल ऑर्गेनेली, कभी किसी सेल ऑर्गेनेली को देखा है दो अलग अलग यूनिट से बना हुआ? तो यही सब रीजन है कि वो सेल ऑर्गेनेली नहीं बता सकते उसको। इज दिस क्लियर टू यू? ना कि तुम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल ऑर्गेनेली कौन है? सेल ऑर्गेनेली है क्लोरोप्लास्ट, सेल ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट है तो ल्यूकोप्लास्ट भी होगा, क्रोमोप्लास्ट भी होगा। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट, दिस थ्री आर एक्चुअली प्लास्टिड्स। Leucoplast is the storage plastid which carries leucoplast में भी division है, amyloplast, allyloplast, and allyloplast. Amyloplast carries stores carbohydrate, allyloplast stores fats, and another chloroplast is there which stores protein. उसको क्या कहते हैं? I will उसको प्रोटीनोप्लास्ट भी कहते हैं, ठीक है? तो ऐसे याद रखो, ल्यूकोप्लास्ट आर द स्टोरेज प्लास्टिड्स which can be known as allyloplast. Allyloplast stores fats and oils. Amyloplast stores carbohydrates, and proteinoplasts which stores proteins. Chromoplasts are the plastids which contain, leucoplasts are the plastids which contain, does not contain any pigment. They are thus for storage. And chloroplasts are the plastids which contain chlorophyll as its pigment, green pigment. And chromoplasts are the plastids in which the green pigment, the chlorophyll has converted to other kinds of pigments, or are containing other kinds of pigments which has different colors, and that occurs with the process of ripening and etc. etc. Suppose, for example, the peel of the mango, it is green when it is unripe, but becomes yellow colored when it is ripe. This is due to because in the peels the chromoplasts have changed their color of the flowers, flower petals. Are you getting my point? So this is one thing. Now these are plastids. We understood about plastids? Sir, each of the plastids carries their own DNA, own protein, and are double membraned and are carrying their ribosomes. Yes, each of the plastids. And then talking about mitochondria, mitochondria is a double membrane, but the inner membrane of mitochondria is very much irregular shaped. The outer membrane is fine, circular. The inner membrane is irregular shaped and has created irregularities which is known as cristae, cristae. Sir, why so? Again, to increase the surface area. That's why this kind of, there are invaginations. The inner membrane is little bit distorted and is invaginated and has created cristae. So why there is requirement of increase of surface area of the inner membrane of the mitochondria? Because all the respiratory enzymes that are required to break down food and convert into ATP requires lots of chemical reactions which occurs inside the mitochondria, and the enzymes required to do that are present in the inner membrane. Like the transmembrane proteins I taught you, cell membrane के अंदर होता है. In the inner membranes of the mitochondria, there is, embedded proteins. These proteins are actually
the enzymes which does these chemical reactions for respiration, so that respiration can occur inside mitochondria. You will learn in class 10 that in respiration what happens, there is glucose at first. Whatever you eat gets converted into glucose and is stored in your liver as glycogen. In plant, glucose is stored as starch. But whenever you required energy, this starch or glycogen is broken down into glucose, and this glucose is transferred to various parts of the cell, either through the sap in plants, through the phloem, or through blood vessels to the muscles in human, or whatever it is. In unicellular organism, so that is not required. I'm talking about higher multicellular organism. It is transported, and that glucose is at first broken down in the cytoplasm. Glucose is broken down into pyruvate, and that pyruvate is taken by the mitochondria. Now mitochondria does its work and creates lots of energy, lots of molecules of ATP. The energy that is created is stored as ATP. Whenever energy is created in the cell, if the cell wants to store that energy, okay, it will store it in ATP, adenosine triphosphate. You should remember the full form also, adenosine triphosphate. Okay, ATP. In this triphosphate, actually at first it is ADP, adenosine diphosphate. They make one bond with another phosphorus, it becomes adenosine triphosphate. When that bond is created, that energy is stored. Are you getting my point? And when the cell requires to do some inner work, it takes that stored ATP and breaks the last phosphorus bond, and it becomes ATP to ADP, and that energy that comes out is used by the cell. This is how cell stores and uses energy. ADP is adenosine diphosphate. Is this clear to you? So whenever you take in glucose, the energy from the glucose is utilized, is broken down. Glucose is broken down through various chemical reactions, and these various chemical reactions through which glucose is broken down, are you getting my point, occurs inside the mitochondria. And that is why in the mitochondria only ATP is made. That's why mitochondria is known as the powerhouse of the cell, because it generates the energy. Is this clear to you? Understood? It generates means it's controls the energy. More appropriate will be it controls energy. Energy to pacchi glucose theke, and that should come from nutrition, food that we take in. Are you getting my point? But that energy is harvested in the, or converted in the form of molecule, or stored by the mitochondria, and the mitochondria stores it in the form of ATP. Clear? Okay, so that is pretty much what I wanted to teach today. Is this clear to you? Okay, wait.